Delhi's Swaroop Nagar turned into the center of a shocking anti-drug operation after a woman from Africa allegedly jumped to her death during a police raid that exposed what officers claim was a synthetic drug manufacturing lab running inside a residential building. The entire operation began with an earlier narcotics case that is registered at the police station where police had arrested a man identified as Frank Dashmont. During the interrogation, investigators reportedly traced the supply chain of drugs and eventually reached a building near a MCD school in Swaroop Nagar. Acting on specific intelligence, the Anti-Narcotics Squad of North District launched a raid at the location, and according to the police, the first breakthrough came when officers detained a man identified as Romeo, also known as Sky, from one of the flats in the building. During the search, police allegedly recovered around 30 grams of MDMA and 1.5 grams of heroin from his possession. But what looked like a routine narcotics raid quickly unfolded into something much bigger. As police began checking the upper floors of the building, they discovered that two African nationals were living in separate flats. Officials said that when officers entered one of the apartments, a woman identified as Stella Pius allegedly panicked and jumped from the balcony of her flat. She suffered critical injuries and was immediately rushed to the government hospital where doctors declared her dead on arrival. The incident has now triggered parallel investigation, one into the narcotics network and another into the exact circumstances surrounding her death. Police then detained another foreign national identified as Martin Aaron from a nearby flat, and investigators claim that a key recovered from him opened a lock from room inside Stella's apartment. What officers allegedly found inside shocked even the investigation team. According to the police, the room appeared to be a fully functioning clandestine synthetic drug laboratory. Officials said that the search led to the recovery of large quantities of chemicals, laboratory glassware, beakers, pipes, weighing machines, flasks, cylinders, stoves, distillation units, and sacks containing suspected raw materials that is used for manufacturing drugs. And among these substances seized were nearly 100 liters of unidentified chemical liquid, 10 liters of hydrochloric acid, over 15 liters of hypophosphorus acid that is stored in multiple bottles, more than 35 kilograms of white powder, 21 kilograms of black granules, over 4 kgs of black liquid, and around 192 grams of suspected MDMA. The findings suggest that the premises were being used both as a storage facility and as a production unit for synthetic narcotics, including methamphetamine and MDMA. Joint Commissioner of Police Madhur Verma confirmed that investigators had uncovered what appears to be a methamphetamine manufacturing lab operating from the residential building, and he stated that the raid was part of an ongoing crackdown on drug suppliers and their wider networks across Delhi. Police have now sent all the seized substances for forensic examination while investigators work to identify the origin of the chemicals, the scale of the operation, and the larger network that is allegedly connected to the suspected drug manufacturing unit. Meanwhile, Swaroop Nagar police are conducting inquest proceedings into the Stella Pius death in order to determine exactly what happened during the raid, and what began as a targeted anti-drug operation has now exposed a possible international narcotics links, a suspected synthetic drug lab hidden inside a Delhi neighborhood, and a mysterious death that has raised several unanswered questions. And as the investigations continue, authorities are trying to piece together how deep this network runs and who else may be involved in what could turn out to be a major narcotics operation operating from the heart of the capital. 9 जून को हमने बुराड़ी में एक केस दर्ज किया था जिसमें हमने एक डैशमंड नाम के बंदे को गिरफ्तार किया था। हमारे पास काफी समय से इन्फॉर्मेशन थी, मानस पोर्टल के ऊपर टिकट भी थी और पीसीआर कॉल्स पे भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वो एमडीएमए नाम का एक ड्रग जो सिंथेटिक ड्रग है उसको बेचने का काम करता है। तो हमारी टीम लगी हुई थी और हमने बुराड़ी में उसको गिरफ्तार किया और उसके पोजेशन से हमको 68 ग्राम एमडीएमए मिली थी, जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी 10 ग्राम एमडीएमए की है। तो उसको हमने गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ की और सोर्स के बारे में जब हमने पता किया तो सोर्स की खोज में हम लोग स्वरूप नगर के इस इलाके पे पहुंचे। इसमें तीसरी मंजिल में हमको एक रोमियो एलियस स्काई नाम का एक आदमी मिला, जिसके पोजेशन से भी हमको 30 ग्राम एमडीएमए और 1.5 ग्राम हेरोइन मिली। फिर उसमें जो चौथी मंजिल थी उसके ऊपर भी हम लोगों को था कि एक बार सर्च करें, क्योंकि वहां पे भी 2 लोग और रहते थे। तो उसमें एक जैसे ही हमने कमरा खोला और उसके अंदर एक महिला बैठी थी, जिस जैसे खोला और हमें सीधा उसने जो है चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और
उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। फिर जो एक और वहाँ पे था मार्टिन एरोन नाम का व्यक्ति, जो सामने वाले फ्लैट में रहता था, उसके पास एक चाबी मिली, जिससे उस महिला के फ्लैट के कमरे में जिसमें ताला लगा था उसको खोला गया, और उसके अंदर हमें एक फैक्ट्री मिली जिसके अंदर MDMA बनाया जाता है, सिंथेटिक ड्रग जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और रॉ मटेरियल को स्टोरेज किया जाता है। वहां से हमें भारी मात्रा में केमिकल मिले हैं, जिसकी डिटेल मैंने आप सबके साथ शेयर करी भी है उसके अंदर। और वहां पे फर्दर हमें उसी सामान के अंदर 193 ग्राम MDMA फिर से एक तैयार माल मिला। तो इस प्रकार इस पूरे केस में अभी तक हमको 300 ग्राम के आसपास MDMA की रिकवरी हो चुकी है, प्लस जो कच्चा माल है, जो केमिकल्स हैं, जिनकी बॉटल्स हम लोगों को, कई तरह के एसिड हैं, उसमें बीकर है, फ्लास्क है, वेइंग मशीन है, स्टोरेज है, और जो पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, जो भी एक सामान काम में आता है एक तरह के ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में, उसके अंदर वो भारी मात्रा में हमको मिला है। करीब 300-400 बॉटल्स हैं केमिकल की, एसिड्स की, तो वो सारे केमिकल हम लोगों को मिले हैं। और अब आज हम लोग NCB और ANTF जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, उनके साथ एक जॉइंट इंटरोगेशन हम करवा रहे हैं, जिससे कि इस नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इस केमिकल से कितना और MDMA बन सकता था, और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कि इनके पैसे का लेन देन कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर अभी आगे की जांच हमारी एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो इस पे आगे काम करेगी। सर, जो ड्रग्स रिकवर की उसकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू, उसकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू अभी मैं सर्टेन कर रहे हैं, बट रफली हम मान सकते हैं कि उसकी 50-60 लाख रुपए के आसपास उसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। जो महिला सर पूरी जिसकी मौत हुई, वो कब से इस गैंग के साथ जुड़ी हुई थी और उसका पूरा रोल क्या था इसके अंदर? देखिए, अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी हो जाए, प्रारंभिक सूचना ही है हमारे पास। उसके अंदर जो लेडी थी, उसका नाम स्टेला पुइस है, उसका वहाँ पे हमको एक नाइजीरिया का वोटर ID कार्ड मिला है, और इनके पास भी दस्तावेज मिले हैं, बट ओरिजिनल ये फोटो कॉपीज हैं। तो अभी तो हमें पहले ये असर्टेन करना है कि ओरिजिनली ये कौन से नेशनल्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, और नकली बनाए तो कहाँ से बनाए हैं, और दूसरा ये कितने टाइम से यहाँ पे जुड़ी हुई है, वो अभी तो हम लोग कंक्लूसिवली नहीं कह पाएंगे। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ड्यू कोर्स में वी विल शेयर इट। सर, ये गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक इसके अंदर 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, ये फॉरेन नेशनल्स गैंग ऑपरेट कर रहे थे, अन्य लोग भी जो शामिल थे इसमें? अभी तक हमारी गिरफ्त में 3 फॉरेन नेशनल्स ही हैं। अब लोकल इसके साथ कौन एसोसिएटेड है, दैट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी हैव सीज्ड डिजिटल डिवाइसेस आल्सो फ्रॉम देयर फ्लैट्स, एंड बेस्ड ऑन further investigation we will be able to uncover the whole network. That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.